गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों को न्यूमेरिकल एनालिसिस जो टॉपिक हमारा चल रहा है उस टॉपिक में प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। इनके कुछ वीडियोस हमारे पहले आ चुके हैं जिनमें हमने थ्योरम्स नंबर 3.1, 3.2 कल के वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था। आज हम 3.3 थ्योरम इज गिवन बाय दिस the nth divided difference can be expressed as the quotient of two determinants each of order n plus 1। अर्थात n वा विभाजित अंतर को हम सारणिकों के दो सारणिकों के विभाजक के रूप में ऑर्डर उसका होगा n प्लस 1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या एक्सप्रेस किया जा सकता है। इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट सारणिकों का क्रम वो कैसे होगा। nth डिवाइडेड डिफरेंस, जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस लिया तो आप इसको इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट, द्वितीय क्रम के सारणी क्रम के रूप में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। देन प्रूफ लेट फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस बाय डेफिनेशन f of x0 x1 equals to f of x1 minus f of x0 upon x1 minus x0. So this can be written as f of x1 f of x0 or 1 1 upon x1 x0 and 1 1. So this is the determinant of 2 by 2, 2 by 2. This is the determinant of 2 by 2. So this can be written as in this form f of x1 f of x0 and 1 1, then f of x1 minus of f of x0, जब एक्सपेंड करेंगे इस सारणी को, इस डिटरमिनेंट को, तो f of x1 minus f of x0 similarly upon x1 minus x0. This is the first divided difference. So this first divided difference, then order of the determinant is 2 by 2, 2 by 2, order of determinant is 2 by 2. Now second divided difference, we know that f of x0 x1 x2, so this can be written as in the last theorem we have proved f of x0 x0 minus x1 and x0 minus x2 means x0 minus x1 and x0 minus x2. So this can be written as in the summation form f of x0 upon x0 minus x1 x0 minus x2 plus f of x1 upon x1 minus x0 x1 minus x2 plus f of x2 upon x2 minus x0 and x2 minus x1. So this summation can be written as in this form of this. This is the definition of second divided difference. So now taking LCM of x0 minus x1, LCM is x0 minus x1 and x1 minus x2 and x2 minus x0. Taking LCM of this type, then minus of f of x0, x0 minus x1 and x0 minus x2 से माइनस हमारा कॉमन हो गया, so this is your x1 minus x2 plus f of x1, x1 minus x0, x1 minus x0 से माइनस x1 minus x2, so x2 minus x0 plus f of x2 and x2 minus x0 minus में x2 minus x1, again x2 minus x1 तो दोनों का माइनस, this implies x1 minus x0, x1 minus x0 because taking outside of the negative form, so x1 minus x0 या x0 minus x1. Now convert it into determinant form. Now convert into determinant form. So this can be written as a Venter theorem, Vanderpoort theorem. So we can write in this form. So this equals to x0 square, x1 square, x2 square, x0, x1, x2, 1, 1, 1. So
Now, second order divided difference can be written as f of x0, f of x1, f of x2, x0, x1, x2, 1, 1, 1, and divided by x0 square, x1 square, x2 square, x0, x1, x2, 1, 1, 1. This is equals to, this is the third by third order. Again, this is the third by third order. Means सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस, द्वितीय विभाजित अंतर को हम अगर वंडरवॉल थ्योरम पे यूज करें तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो x0 x1 माइनस x2 प्लस x1 स्क्वायर x2 माइनस x0 plus x2 square is x1 minus x0 minus x1. So when you multiply all of these things, you get this one. So when you multiply f of x0, then x1 minus x2. This one is this. Second, f of x1 is x2 minus x0. Third one is x0 minus x1. This is your x0 minus x1. So in numerator part of this equation is given by this. and denominator part is given by this. आपस में इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इसको एक्सपेक्ट करेंगे इस सारणी को उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आ जाएगा. नाउ यूजिंग दिस इन द हायर now using these terms in the higher order, so we get if f of x0, x1, x2, x3, this is the third divided difference, del q f of x0, x1, x2, x3. So this is equals to summation of f of x0. We know that x0 minus x1, x0 minus x2, x0 minus x3. So this is equals to summation of f of x0 in this determinant form, summation of f of x0 and x1 square, x2 square and x3 square, x1, x2, x3 and 1, 1, 1. This one divided by x0 cube, x1 cube, x2 cube, x3 cube, then x0 square, x1 square, x2 square, x3 square, then x0, x1, x2, x3, then 1, 1, 1, 1. So when you apply this part, so this equation will be converted as in the summation form f of x0, f of x1, f of x2, f of x3. Now x0 square, x1 square, x2 square, x3 square, then x0, x1, x2, x3, then 1, 1, 1, 1, divided by x0 cube, x1 cube, x2 cube or x3 cube. Now x0 square, x1 square, x2 square, x3 square. Now x0, x1, x2, x3, 1, 1, 1, 1. So this is the third order divided difference. Can be written in the determinant of 4 by 4, 4 by 4. And this also is 4 by 4. So it can be represented as, this is the third order. This is the third order divided difference. Third order divided difference can be written as, इसको अपन किसके इक्वल लिख सकते हैं, fourth order of the determinant, division of the determinant. Now we can write of nth order, if nth order divided difference can be written as can be written as n plus 1th order of the determinant. So this theorem is we prove that if n divided difference is x can be expressed as the quotient of the determinant of
डिटरमिनेंट्स ईच ऑफ द ऑर्डर n+1 मीन्स हमारे पास जो डिटरमिनेंट मिलेगा वो डिटरमिनेंट हमारा n+1th टर्म ऑर्डर का डिवाइड की फॉर्म में डिटरमिनेंट प्राप्त होगा. नाउ एक इंपॉर्टेंट रिलेशन, that is very important relation for the examination point of view. Another relation is very important from the examination point of view. Relation between ordinary and divided difference. बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. अब हम जानते हैं इसके बीच का रिलेशन हमें निकालना है. सो रिलेशन इज गिवन बाय, हम जानते हैं कि if x0, x1, x2, x3 up to xn are in equal interval, therefore x1 minus x0 equal to x2 minus x1 equal to and so on xn minus 1 equals to h. ये हम जानते हैं. So this implies we know that by the definition we know that delta of f of x0 equal to f of x1 minus f of x0. So similarly, delta square f of x0, this is equals to delta f of x1 minus delta f of x0. Now, and delta cube f of x0, this is again delta square f of x1 minus delta square f of x0. Therefore, divided difference हम जानते हैं f of x0 x1, this is your f of x1 minus f of x0 upon x1 minus x0. So this is equals to delta of f of x0 upon h. This is your delta f of x0 upon h from first. Now delta square f of x0 x1 x2. So this is equals to f of x1 x2 minus f of x0 x1 upon x2 minus x0. So this is equals to, we know that 1 upon h delta f of x1 x2 means f of x1 minus 1 upon h delta f of x0 upon x2 minus x1 plus x1 minus x0. So this implies 1 upon h delta f of x1 minus delta f of x0 upon twice h. So this is equals to delta square f of x0 upon factorial 2h square f of x0. Delta square means ये जो टर्म है हमारा from second, this is your third. So this is your from second. Now we have to prove for the nth term. Now we want to prove for nth term. So this is equals to, similarly, delta raised to n f of x0 x1 x2 up to xn. This is equals to delta raised to n f of x0 upon factorial n h raised to n. This is the relation between ordinary and divided difference. This is very important relation for the point of examination point of view. This relation is very important for in the examination point of view. Now इसके बाद कल हम जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे उसमें हमारे डिवाइडेड डिफरेंस के जो फॉर्मूले हैं जिन पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ये थ्योरम्स का लास्ट पार्ट था जिसको आप इसको देख लें वीडियो को, और वीडियो को देखते रहें लगातार. ये डिवाइडेड डिफरेंस है, ये सिंपल डिफरेंस है, ऑर्डिनरी डिफरेंस है.
इसका डिफरेंस आपको ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि डिवाइडेड डिफरेंस की डेफिनेशन में हम लोग डिवाइड करते हैं, ये अनइक्वल के लिए है, लेकिन इनके बीच का रिलेशन निकालने के लिए हम लोग इक्वल इंटरवल मानते हुए इसको सॉल्व कर रहे हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके फॉर्मूले प्रूव करेंगे।